As we have discussed in the previous video, trait theories of personality, जहाँ पे हमने गॉर्डन ऑलपॉर्ट की बात करी थी और कैटल्स 16 personality factor की बात करी थी. So now today we're going to talk about Hans Eysenck three dimension of personality traits. Hans Eysenck continued the research of personality traits, जो कि जैसे कि हमने previous videos में we have talked about the histories and certain keywords were taken and they were narrowed down. So keeping that thing in a view, उन्होंने भी क्या किया, रिसर्च को कंटिन्यू किया और दे हैड नैरोड द लिस्ट ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स whatever the personality characteristics were proposed by the previous researchers as has been categorized into one is extroversion and introversion, second is neuroticism and emotional stability, third one is psychoticism. So talking about the introversion and extroversion, we're going to talk about in the upcoming slides, as well as we're going to talk about the neuroticism and emotional stability in the upcoming slide under the head of the big five model. So in this current slide, let us understand what psychoticism basically. When we talk about psychoticism, it is something where individual high on mentioned traits, जैसे जब कोई इंसान इस पे इसका स्कोर हाई होगा, would possess or tend to possess difficulty in coping with the situations and with the reality, and they may be treated as antisocial and non-empathetic, and sometimes they will be treated as a hostile and manipulative. So this represents the characteristics of an individual. Talking about big five factor model, which has got a huge recognition across nations. इसको बिग फाइव फैक्टर पर्सनालिटी थ्योरी से भी जाना जाता है एंड ऑल्सो नॉन फॉर बिग फाइव और ऑसियन. Talking about its evolution and its genesis, Fiske has coined this term called as Big Five theory, where later it has been expanded by other researchers such as Norman 1967, स्मिथ ने किया था, गोल्डबर्ग ने किया था, एंड मैक्रे ने किया था, एंड कोस्टा. So all these have contributed towards making big five basically a broad categories of a personality traits. Talking about the cattle theory that we have talked in our previous video, जिसका लिंक हमने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी शेयर किया गया है. बहुत कॉम्प्लेक्स माना गया. इन रिसर्चर्स ने कहा कि दिस इज़ टू कॉम्प्लेक्स टू अंडरस्टैंड, और जो आइंस्टाइन का जो प्रपोज्ड कैरेक्टरिस्टिक्स है, दे आर टू लिमिटेड एंड डज नॉट एक्सप्लेन अप टू ऑप्टिमम लेवल, एंड दैट इज़ वाई कि इस लिमिटेशन को ओवरकम करने के लिए इन्होंने क्या किया, बिग फैक्टर थ्योरी को प्रपोज कर दी, जो कि अमर्ज हुई टू डिस्क्राइब द बेसिक ट्रेट्स दैट सर्व एज अ बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ द पर्सनैलिटी. And that is why it has been denoted and treated as a psychometric test. And psychometric test वो टेस्ट होते हैं जिनको जो एक इंसान की पर्सनैलिटी या मेंटल एबिलिटी या ओपिनियंस को डिस्क्राइब करते हैं. एंड ऑफनली कंपनीज हैव रिसेंटली यूज्ड this big five model in order to identify the potential employees to be recruited in their organization. बिग फाइव मॉडल ऑफ पर्सनैलिटी बेसिकली कैटेगराइज किया गया है. क्यों इसको कहा जाता है? क्योंकि इसमें ये बिग फाइव ट्रेट्स हैं जिसमें सर्टेन नंबर ऑफ क्वेश्चन, हाइपोथेटिकली लेट अस सी 60 क्वेश्चन जो हैं वो पूछे जाते हैं, 60 क्वेश्चंस. एंड ये जो 16 क्वेश्चंस हैं ये रिप्रेजेंट करते हैं एग्रीवेबलनेस, कंसाइटसनेस, इमोशनल स्टेबिलिटी, एक्सट्रोवर्जन एंड ओपननेस ऑफ अ पर्सन. And they have their different meaning to it, right? So certain questions would be shown to you. You're supposed to respond to those questions, and automatically those questions would fall under the head of the agreeableness या conscientiousness, किसी भी एक dimension में वो fall करेंगे. तो ये है five factor of personality. Agreeableness होता क्या है कि एक इंसान की ability to get along with others. It also describes people who are trusting, जो कि helpful रहते हैं या good natured होते हैं. Talking about the conscientiousness, it has been considered as a good measure of consistency in order to ensure the consistency of an individual and reliability. This has been considered as a good measure. Talking about the emotional stability, ये कहता है कि ability to withstand stress. आप how do you behave in stressful situations? And talking about the extroversion, it represents the relational approach towards the social world. How you treat the people around you, how do you interact with them. Openness of experience dimension address करता है the range of the interest and fascination with novelty.
When we talk about these five factor of personality, जैसे agreeableness, conscientiousness, emotional stability and extroversion, openness की बात करते हैं, so how do we measure it? This can be measured by asking certain questions. ये मैंने अपनी previous video में इसको explain भी किया है. When we collect the information on the certain questions which will be shown to the participants, तो उनका स्कोर जो है वो हाई और लो में कैटेगराइज किया जाता है. एंड उसी की बेसिस पे हम कहेंगे कि एग्रीएबल है या नहीं है कोई इंसान, कंसाइंटनेस वो एक्सप्रेस करता है या नहीं करता है. तो जब हाई एंड लो है, इसके बेसिस पे हम जो है किसी इंसान की ट्रेड्स की इंटरप्रिटेशन करते हैं और उसी उसके बेसिस पे हम कहेंगे कि वो इमोशनली स्टेबल है या नहीं है. टॉकिंग अबाउट द हाई स्कोर, हाई एग्रीएबलनेस रिप्रेजेंट्स the score high would represents the high agreeableness, and wherever low score would represent a low agreeableness. कंसाइटनेस में भी सेम तरह से काम करेगा. तो हमारा स्कोर जब हाई होगा तो इट वुड रिप्रेजेंट द हाई इमोशनल स्टेबिलिटी एंड लो वुड रिप्रेजेंट द लो इमोशनल स्टेबिलिटी. बट वेयर एज वी टॉक अबाउट द एक्सट्रोवर्जन, हाई स्कोर वुड रिप्रेजेंट द एक्सट्रोवर्ट नेचर ऑफ अ पर्सन एंड लो स्कोर वुड रिप्रेजेंट द इंट्रोवर्ट नेचर ऑफ अ पर्सन. अब समझते हैं इसको डिटेल में कि एग्रीएबलनेस हाई और लो कैसे काम करता है. सो व्हेन वी टॉक अबाउट दिस हाई एंड लो, दिस रिप्रेजेंट्स द स्कोर. So that means someone would have filled up the questionnaire and उन क्वेश्चनियर को एनालिसिस करने के बाद हमारे पास ये स्कोर आए हैं, हाई या लो हो सकते हैं और कंस्ट्रक्ट्स हमारे पास ये दिए गए हैं. तो एग्रीएबलनेस बेसिकली रिप्रेजेंट क्या करता है, वार्म, ट्रस्टिंग एंड कोऑपरेशन नेचर ऑफ अ पर्सन. Wherever low score in agreeableness would represent the disagreeableness of a person, maybe antagonist and competitive. Talking about the antagonistic would mean that no person who is actually against somebody or something. Talking about the conscientiousness, it represents the means it represent would mean the high score on conscientiousness represents the person is responsible, self-disciplined and organized. लो स्कोर है उसमें जब इजीली डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, वो डिसऑर्गेनाइज रहते हैं और दे आर एक्चुअली लैकिंग इन स्ट्रॉन्ग डिजायर टू परस्यू देयर गोल्स. जब वो गोल डिसाइड करते हैं सो दे विल बी हैविंग लो डिजायर. एक्चुअली उनको जो है बहुत ही जल्दी जो डिस्ट्रैक्ट किया जा सकता है. बाय टॉकिंग अबाउट द कंसाइंटनेस, जिनका स्कोर हाई है, दे विल बी सॉर्ट ऑफ सेल्फ डिटरमिन्ड, मीन्स वो अपने गोल डिसाइड करेंगे और उनको परस्यू भी करेंगे. बट टॉकिंग अबाउट दे वुड ऑल्सो डिसाइड द गोल्स वट दैट दे कैन ईजिली बी डिस्ट्रैक्टेड. Talking about the third traits under the head of the Big Five model, emotional stability, high score would represent calm, self-confident and secure, whereas low score would represent nervous, depressed and insecure. Means certain situations हैं, जैसे कि हमने बात करी थी अपनी प्रीवियस वीडियो में भी कि MS धोनी जो है वो certain situations मिली उनको, स्ट्रेसफुल भी थी और हैप्पी मोमेंट भी थे, बट ही केप्ट हिमसेल्फ एज अ काम पर्सनैलिटी. And sometimes we have seen that someone who would actually face certain situations where they cannot control their emotions, that would be leading to the depressed moment or maybe insecure moments. So hence it will result in the nervous and you will not be able to perform up to the optimum level. When you control your emotions, then you would be represented as a high on emotional stability. Talking about the extroversion, it represents the gregarious, outgoing, and assertive nature of a person, means how you interact with the other person, how you treat the social world around you. So basically describes people who are outgoing, talkative, energetic होते हैं, sociable होते हैं and assertive होते हैं. और इसका जो opposite है जो हमने लिखा हो यहाँ पे, introvert and reserve, which characterizes those who are quiet, cautious and less interactive with others. The extroverts get their energy from outer world, whereas introvert get their energy from the inner world, such as personal reflection on concept and ideas. Introverts do not necessarily lack social skills. Instead, they are more inclined to direct their interest to ideas and then to a social events. Talking about the openness, where it talks about the risk taking ability of the person, how you are, and it also talks about the keenness of a person to know or to know new something or ideas generation के लिए, or maybe they are more imaginative in nature. The low score in openness represents resistance to new idea, less creative and conventional.